एक और दिन, एक और सुबह ज्ञान विज्ञान के नाम। भारतीय विज्ञान संचार के क्षेत्र में इस पावन अवसर पर जबकि हम पूरे देश भर में स्वतंत्रता की महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, तब ग्रुपनेट विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ साइंस क्लब्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रयोग किया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्चर टीचर साइंटिस्ट इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट इंडिया, और उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की ओर से जो साइंस वॉलंटरी साइंस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है भाषा इंडिया, उसी के पहल था कि हमने पूरे देश भर के बच्चों को भविष्य में वैज्ञानिक बनने की जो सोच हमारी परंपराओं में था, जिस तरीके से हम बिना कुछ टेक्नोलॉजी के यूज से हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से लेकर बराहमीर तक बहुत सारी खोज उन्होंने किया, लेकिन बीच में थोड़ा सा अंधेरा छाने के बाद फिर एक बार हमारे बीच आए डॉक्टर विक्रम अम्बला साराभाई, डॉक्टर हमियो जहांगीर भाभा और सीवी रमन जैसे व्यक्तित्व, और उन्हीं की बदौलत आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी एक कड़ी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL, जो कि भारत की महत्वपूर्ण संगठन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है और भारत को बहुत ही स्वच्छ वैद्युतिक उपकरणों से महत्वपूर्ण जो हमारी विद्युत डिमांड है वो पूरी करने की एक पहल है, और उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें में वो शामिल है। ना केवल साइंटिफिक अप्रोच के साथ साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बच्चों को किस तरह से इन सभी चीजों से जोड़ा जाए, उस महत्वपूर्ण उद्योग में भी वो तत्पर है। आज हम उन्हीं की पहल से, जबकि वो NPCIL DAE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है 22 अगस्त से 28 अगस्त तक, और पूरे देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पॉपुलर साइंस टॉक के द्वारा बच्चों को और टीचरों को और कम्युनिटी को इसके साथ और DE के कामों के साथ जोड़ने का एक पहल किया जा रहा है। हम उसी पहल के साथ आज जोड़ के आए हैं। हमारे बीच आज है बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व, जिन्हें हम NPCIL की पहली महिला इंजीनियर के तौर पे भी जानते हैं। आज वही हमारी स्पीकर है और उन्हीं से हम व्याख्यान लेंगे, लेकिन उसके पहले उनसे उनके बारे में जानेंगे और छोटा सा इनॉग्रेशन सेशन होगा, और उसके बाद हम जाएंगे बच्चों से मिलेंगे और उनसे व्याख्यान लेंगे, और बच्चे उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी परमिशन से, और बीच में ना हो तो भी अच्छे है, वो अपनी नोट रखे, और बाद में उनकी जो व्याख्यान ध्यान से सुनने के बाद उनसे सवाल करने से मुझे लगता है अच्छा रहेगा। तो आगे चलते हैं। आज हमारे बीच है इंजीनियर झरना तानेजा मैम, आपको स्वागत इस मंच पर। डिप्टी चीफ इंजीनियर NPCIL हेडक्वार्टर मुंबई, मैम आपको स्वागत है। मैम आपकी इजाजत से थोड़ा सा इनॉग्रेशन सेशन करके बच्चों के साथ मिलते हैं मैम।
तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है इंजीनियर झरना तानेजा मैम की, respected Deputy Chief Engineer, Corporate Communications, and the first engineer serving at NPCIL headquarter, Mumbai, under the Department of Atomic Energy, Government of India. स्वागत है मैम। मैम के बारे में अगर थोड़ा सा बताया जाए तो इस तरह की होगी। डॉक्टर इंजीनियर Jharna Taneja, Speaker of the Day during the iconic week celebration, plus 22 to 28, 2022 of Department of Atomic Energy, Government of India, having extraordinary experience of 20 years of working for the most advanced, India's pride organization and prestigious institution, the NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited, the dream institution of both great scientists, Dr. Vikram A. Sarabhai and Dr. Romeo J. Bhava. Engineer Jharna Taneja Madam is the first lady engineer of India to have operated a nuclear power plant, which is our pride of India also. Engineer Jharna Taneja presently is working in corporate communications of NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited, headquarter Mumbai. She is one prime advisor of our organization and organization activity also under the logistic affiliation of Vigyan Prasad, Department of Science and Technology, Government of India. Engineer Jharna Taneja, Speaker of the Day during the iconic week celebration of Department of Atomic Energy, Government of India, is here to celebrate with us, all of us, the Azadi Ka Amrit Mahotsav of India, and will tell the saga of atomic energy program in India, along with the basics of the nuclear energy, and motivate our students and teachers both for future scientists. In presence of Engineer Taneja Madam, it's just a virtual inauguration. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunatu Saha Viryankarvavati Tejasvinavate Tamasto Mavat Vishabhai.
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मदेव नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदपकितारमवतु आवतु माम् आवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। तो आगे बढ़ते हैं, हम अभी बच्चों से मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस झरना तनेजा मैम। अभी मैं लीड स्टूडियो कर दूं, हाँ, स्टूडियो लीड कर दूं। एक और महत्वपूर्ण दिन करीब हम सब के लिए, जब हम एक मुहिम चला रहे कि बच्चों और टीचरों से मिलकर सब एक साथ जोड़कर एक। सर आप म्यूट पे हैं, एक्चुअली आपका आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू मैम। एक और करी और एक और दिन हम सब एक मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, जब हम सभी का एक ही मकसद है कि बच्चों को किस तरह से वैज्ञानिक बनने की ओर, उस चाहत को एक अंजाम देने की ओर हम गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, हम आगे बढ़ पाए। तो इस कड़ी में आज हमारे बीच एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन खपाया है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, और
जो कि देश की जाने माने इंजीनियर है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फर्स्ट लेडी इंजीनियर है जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके पीछे एक सोच था, एक सपना था, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी और होमियो जहांगीर भाभा जी की। तो आज हमारे बीच है इंजीनियर झरना तनेजा मैडम। मैडम, आपका स्वागत है इस मंच पर, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे देश भर से जुड़े हुए हैं और शिक्षक भी जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो स्वागत है आपका। और इसी के साथ हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं आज के व्याख्यान के लिए भी। तो मैम, शुरुआत करें। ओवर टू झरना तनेजा मैम। बच्चे को किसी को भी अगर कोई सवाल पूछना है वो चैट बॉक्स में लिखे या फिर वो नोट करके रख सकते हैं। मैम बताएंगे आप कब पूछेंगे, तो उस तरीके से आप उनसे रूबरू होके एक साथ मिलके हम इस सेशन को एक यादगार सेशन बना सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू झरना तनेजा मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्पेशली बानिक जी का, इतने वार्म वेलकम के लिए और इतने सुंदर विवरण के लिए। सो अभी और टाइम ना लेते हुए वी विल स्टार्ट विद द सेशन। सो एक्चुअली बिफोर कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मैं इनफैक्ट जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि मैं कुछ आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है, and then accordingly we will proceed with the session. तो हमें we are celebrating 75 years of Indian independence. 75 साल हो गए हमें आजादी मिले हुए। इन 75 सालों में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, देश के विकास में परमाणु ऊर्जा ने अपनी क्या भूमिका अदा करी है, आज हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो जैसे महात्मा गांधी को बोलते हैं भारत के मतलब फादर ऑफ द नेशन, उसी तरह से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आप में से कोई ऐसा है, मतलब कितनों ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना है? सुना है आप लोगों ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना है? ओके। कोई एक जना बताएगा क्या वो कौन थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? केशव, आप बताएंगे? Yes, ma'am. Ma'am, you are the scientist of India. He is also known as the Indian space scientist. Okay. इंडियन स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता था। Actually, Dr. Homi Jahangir Bhabha is known as the father of the Indian Atomic Energy Program. तो अब ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम क्या है? अभी एटम आप लोगों को पता है एटम क्या है? एटम क्या होता है पता है? तन्वी, आपको पता है एटम क्या होता है? क्या? फिर से बोलिए। किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट, smallest unit of any matter. फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। बच्चों आप मैंने कहा था कि चैट बॉक्स में लिखो, जबकि मैम अलाउ कर रही है तो आप उनको रूबरू मतलब अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं। थैंक यू मैम। ओवर टू यू। या सो हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज एटम। एटम में क्या क्या होता है? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं ना? Yes, ma'am. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसमें एटम में एक तो इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल्स होती हैं और एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। वेरी गुड। तो जो प्रोटॉन। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, सो जो भी कोई ये होता है ना केमिकल रिएक्शन, अब आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे पता है ना?
मतलब मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन Yes, गिविंग कार्बन ma'am. डाइऑक्साइड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, रिएक्शन होता है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस स्प्लिट होता है into its daughter elements, या फिर दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं to form a bigger nucleus, those are known as nuclear reactions. They are different from whatever chemical reactions you are reading. They are happening at the level of the nucleus. वो nucleus के level पे होते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शन कौन कौन से होते हैं आपने कभी सुना है? जैसे मान लो मैं बोलूं केमिकल रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन भी मेनली दो तरह के होते हैं। आपने सुना है क्या किसी ने? फ्यूजन एंड Yes, ma'am. Hydrogen bomb, atom bomb. Yes. वो रिएक्शन नहीं है बेटा, Fusion रिएक्शन and इज fusion. बिल्कुल। हाँ, आपका नाम क्या है? खुशी। हाँ, खुशी। यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। खुशी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। अभी कोई मुझे बताएगा क्या फिजन रिएक्शन में क्या होता है? Ma'am, atoms are splitting apart, and in fusion, the atoms are coming together. Correct, absolutely correct. So you are very correct. Just instead of atoms, we are talking about the nucleus. So in case of a fission reaction, a big nucleus breaks into smaller nuclei, whereas in case of a fusion reaction, two smaller nuclei fuse to form a bigger nucleus. So these are the kind of nuclear reactions which are taking place. अभी ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, ये किधर होता है आप लोग को पता है? फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूअसली, हाँ वेरी नाइस अभिमन्यु, हाँ सन पे हो रहा है। वेरी गुड अविराज, यस यस वेरी नाइस, सन पे, स्टार्स पे, करेक्ट। हाँ, एंड फिजन रिएक्शन कहाँ हो रहा है? नेचुरली फिजन रिएक्शन भी हो रहा है, किधर हो रहा है पता है किसी को? ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पता है किसी को? जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या है? क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्या? क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्या? फिजन रिएक्शन, हाँ वेरी गुड। सो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, वेयर आर यू गेटिंग दिस थर्मल एनर्जी फ्रॉम? अर्थ के क्रस्ट में, कोर में जो यूरेनियम मेटल है ना, which is naturally existing, that is undergoing natural fission reaction, as a result of which lot of heat energy is generated, which is accounting for the geothermal. A major part of it is accounted, a major part of geothermal energy is accounted by the fission reaction of uranium atoms, which is taking place inside the crust of the earth. तो आप लोग को इतना तो पता है, very good. So with this base, I will just share my this also presentation. 1 second. स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं मैम। दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। Okay. Yes, ma'am, it is visible. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay. So देखिए, so हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, so just to give you a figure, the total world electricity generation in the year 2020 was of the order of 26,823 terawatt hour. और उसमें से जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर वाज अराउंड 2653। ये 21 के फिगर है, 20 के फिगर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। सो अराउंड 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज जनरेटेड इन द वर्ल्ड इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर।
न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ, और जैसा कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट, बिजली का रिक्वायरमेंट हमारे डेली लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग टू द टाइम व्हेन वी स्लीप एंड इवन ड्यूरिंग स्लीप। कोई भी ऐसा हमारा एक्टिविटी नहीं होता है जिसमें हमें इन सम फॉर्म और द अदर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट ना हो। हाँ, so we are very much dependent on electricity for leading a daily life and lifestyle which we are leading at present. In fact, electricity generation in any country is a indicator of the GDP of that country. Okay? So अभी इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अभी ये मैं पहले बात भी करूंगी आप लोगों से। हाँ, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक एक वेरी गुड। हाइड्रो है, सोलर है, थर्मल है, विंड है। हाँ, वेरी गुड। विंड मिल्स, वेरी नाइस। हाँ, सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कुछ को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, कुछ को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। पता है आप लोग को ऐसा? यस। तो आप मुझे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल बताओ। एयर, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल क्या है? सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, वाटर। वेरी गुड। अच्छा, तो अब आप, हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सारा पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इवन न्यूक्लियर इज आल्सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो अभी ये जो है रिन्यूएबल पेट्रोलियम, वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड। तो अभी ये जो, हाँ, वेरी गुड सतिंदर। तो अभी ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसमें जैसे जो पेट्रोलियम की या कोल की या इन सब की बात कर रहे हैं, तो आजकल बहुत एक सीरियस कंसर्न है कि हमें फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इनफैक्ट कुछ भी फॉसिल फ्यूल को यूज करना जितना हो सके कम से कम करना है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई एक जना माइक ऑन करके बोलो। आप बोलो, मनवीर बोलो। क्योंकि उससे पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन होता है, ओके। So that we can save it for future. Because it is declining day by day. Maybe because the resource fossil fuels खत्म हो रहे हैं। ओके, सो बहुत सारा, day by day. सो आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, तो उनको हमें फ्यूल को प्रिजर्व भी करना है। फिर आपने बोला कि क्या क्या, हाँ, फिर आपने बोला कि वो पोल्यूशन कॉज करता है। और आपने क्या, अच्छा, पोल्यूशन कॉज करता है मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट इज कॉजिंग पोल्यूशन? harming the environment. हाँ, दैट इज ओके। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाँ, वेरी गुड। सो वो, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड। सो क्या हो रहा है ना, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये बहुत सारे ऑबनॉक्शियस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, वेरी गुड। सो बहुत सारे ऑबनॉक्शियस गैसेस रिलीज करते हैं, सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है। सो हाँ, excellent Tanvi. So these are known as the greenhouse gases. These are some of the greenhouse gases. अभी उनके emit होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? How is it leading to global warming? उससे global warming कैसे हो रहा है? ये सारे gases release होने से। हाँ, so why is the temperature? हाँ, but why is the temperature increasing because of release of these gases? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड हरजस, वेरी गुड। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट ऑफ दीज गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी है ना? इट ट्रैप्स द हीट एंड इट डज नॉट लेट द हीट एस्केप इनटू स्पेस। तो क्या हो रहा है, धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। चलिए मान लीजिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्या तकलीफ क्या है?
बढ़ने दो अर्थ का टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? ग्लेशियर से आइस है वो मेल्ट हो जाएंगे तो फिर उससे हमें प्रॉब्लम होगा। ओके, आपने बोला Natural disasters. Ozone layer में एंड बारिश भी बहुत When glaciers will melt, flooding can also come. ओके, सो आप लोगों ने बोला कि ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन इज नॉट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग ना? हाँ, it is affecting the climate, glaciers are melting, floods can occur, flow of seas will increase, very good. So glaciers are melting, तो क्या हो रहा है कि जो पानी हमारा आइस के फॉर्म में था वो अब वाटर के फॉर्म में बढ़ रहा है, मतलब द रेशियो ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज इंक्रीजिंग देन इट वाज बिफोर। ठीक है, मान लिया कि सी लेवल राइज हो रहा है, रेशियो वाटर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? बढ़ने दो, तो क्या प्रॉब्लम है? बढ़ रहा है ना? Ma'am, our means the portion land will be, ma'am, means the water will increase, our land will be submerged under the water. Absolutely correct. जो लो लाइंग एरियाज हैं, सी कोस्ट है, वो सब धीरे धीरे वो लैंड पानी के अंदर आ जाएगा, फ्लड्स भी कॉज होंगे, दैट इज करेक्ट। अच्छा, मैं कहती हूँ कि सी लो लाइंग एरिया, सी कोस्ट का लैंड, धीरे धीरे लैंड का रेशियो कम हो जाएगा, पानी का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, पानी के अंदर लैंड आ जाएगा बहुत सारा। मान लो वो भी मान लिया कि आ गया, तो क्या दिक्कत है? आ गया, हाँ, फिर क्या तकलीफ है? मतलब मैम मेरा क्वेश्चन मैम क्लियर नहीं हुआ, और एक बार क्वेश्चन बोलिए प्लीज। नहीं, मैंने, आप लोगों ने बोला ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 मिनट, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, level of water in the seas is increasing, so slowly the land which is lying near to the sea, low lying areas ka land will get, very good, We can't survive them. 1 minute, low lying areas will get submerged in land, तो उससे क्या हो रहा है? It is basically a threat to the life of the human beings. क्यों threat है to the life of the human beings? Because हम ना तो हवा में रह सकते हैं, ना हम पानी में रह सकते हैं, ना हम पेड़ पे रह सकते हैं, so we are the species who is living on land। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो इतना ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो इतना गैसेस, ये फाइनली हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं, और ये करके हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उनको ही रहने की जगह उतनी नहीं दे पा रहे हैं। And not only that, the entire life cycle on the earth is getting disturbed. पूरा लाइफ साइकिल, अभी मान लो कुछ स्पीशीज ऑफ लाइफ हैं which can exist only in a particular temperature region। अब आपने टेम्परेचर ही पूरे अर्थ का हायर ले गया तो बहुत सारा स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एंड उन स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने से ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ द अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा कुछ स्टडी भी नहीं हुआ है उस पे, बट डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि हमें फॉसिल फ्यूल से जनरेशन कम क्यों करना है, हाँ, ये हम समझ गए। अब ये बताओ कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर अ क्लीन एंड ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो फिर हम सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो फिर सिर्फ रिन्यूएबल से क्यों नहीं करते? क्योंकि वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है। हाँ, सिर्फ takes more time to generate electricity with renewable resources. No, from renewable is like sun, expensive, air and water, expensive भी उतना रीजन नहीं है, I will come to that। हाँ, will you? ओ भाई, अभी क्लोन ऑफ द अर्थ पे मत आओ, अभी हम इसी अर्थ पे रहते हैं। हाँ बोलो, सुभाजीत बोलो। हाँ मैम, थोड़ा हम क्वेश्चन फिर से हम ये कीजिए, मतलब फिर से बोलिए, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम एनर्जी जनरेट क्यों नहीं कर सकते?
टेक्नोलॉजी है हमारे पास, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। है, लेकिन मैम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पार्शियली यू आर करेक्ट। देखिए मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर एक पॉइंट है, उसने ठीक कहा। उसके बाद मैम दूसरा पॉइंट है कि मैम जो है ना, वो जो फैसिलिटी है वो मैम चारों तरफ भेजने हैं। मतलब अगर हम भारत की ही बात करें तो मैम भारत के मैम सब कोनों में भेजने के लिए मैम जो टाइम स्पेन और जो खर्चा होगा ना मैम, वो मैम तो हमारे भारत के इकोनॉमी को मैम सबसे पहले एक धक्का देगा। उसके बाद मैम हमारा जो कोल का जो एक मतलब जो कोल यूज होता है, तो मैम उसके बाद से मैम हमें उसका फायदा मिलना अभी चाह बात रहा ही है। नहीं कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं। मैम रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अभी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल लाइक हम कोल से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हमें 10 जूल एनर्जी मिली, वही रिन्यूएबल एनर्जी से हम इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं अभी। क्यों? तो ऐसा क्यों है? टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। वही मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं प्रोवाइड? बिकॉज हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस एनर्जी को उस स्पीड से या फिर उस एनर्जी तक उसको मैच कर पाए। मैम क्योंकि सभी जगह पर ओके तो सबके बहुत वेरिड आइडियाज हैं, मेनी ऑफ देम आर करेक्ट आल्सो। सो नाउ आई विल टेल क्या होता है ना मैम, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते अच्छी तरह से, जैसे हमारे पंजाब हमारे। सही है हाँ। सो नाउ आई विल टेल। तो रिन्यूएबल एनर्जी से क्या हो रहा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, एक तो पॉइंट नंबर 1, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जितना धूप हमें मिलता है, जो नेचर ने हमें दिया है, उतने ही रिसोर्सेज हम टैप कर सकते हैं। Certainly we have not tapped the full potential, but even if we tap the full potential, जैसे कि एक जने ने सही बोला कि उनका एफिशिएंसी लो है। अभी एफिशिएंसी क्यों लो है? बिकॉज दे आर, अभी किसी ने लिखा भी है चैट में, दे आर इंटरमिटेंट सोर्सेज ऑफ पावर सप्लाई। अभी धूप क्या है, 8 घंटा 10 घंटा ही रहेगा, सो ओनली दैट टाइम यू कैन टैप। Rest of the 16 hours you will not be able to tap solar energy. So overall अगर आप 24 घंटे में efficiency देखें in comparison to a plant which is working all the 24, हो सकता है वो 8 घंटे में उसका efficiency अच्छा मिले, लेकिन हमें तो average efficiency पूरे साल या पूरे दिन का निकालना है, तो उस वजह से उसका efficiency low हो जाता है। Same is true with wind. Wind साल के कुछ ही महीनों में blow करती है। अभी मान लो theoretically, हाँ, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि हम मान भी लें कि जितना सोलर, विंड, हाइड्रो, इन सब से हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम इकोनॉमिकली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं एंड हम स्टोर करके हम उसको ट्रांसमिट भी कर पा रहे हैं। जहां पे वो प्रेजेंट नहीं है वहां पे भी स्टोर करके 1 मिनट के लिए हम कॉस्ट की बात नहीं करते। मान लीजिए हम किसी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव बना भी दें कि हम उसे ट्रांसमिट भी कर पा रहे हैं और हम उसे जनरेट भी कर पा रहे हैं और उसे स्टोर करके ट्रांसमिट भी कर पा रहे हैं वहां पे जहां पे वो नहीं है, तो भी क्या सिर्फ रिन्यूएबल से हम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी डिमांड है कंट्री की, दैट इज सो हाई कि ऑल रिन्यूएबल्स पुट टुगेदर, and even if we are storing energy and transmitting, it will not be able to meet the demand of the country. और अभी प्रेजेंट डिमांड ही मीट नहीं कर सकती, तो फ्यूचर डिमांड की तो बहुत दूर की बात है। डिमांड इज एवर इंक्रीजिंग, ठीक है। सो वी हैव टू गो फॉर सम कन्वेंशनल क्लीन एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल क्लीन एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर। ओके, so now coming again to my presentation. So we talked about this renewable, non-renewable, फिर क्या renewable resources है, non-renewable क्या है। अब देखिए न्यूक्लियर की बात करते हैं। So न्यूक्लियर का एनर्जी, मैंने आप लोगों ने भी मुझे बताया कि it is taking, fission reaction is taking place, जबकि थर्मल पावर प्लांट में क्या है, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो अगर केमिकल रिएक्शन होता है और एक केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए 4 यूनिट एनर्जी निकल रही है, 4 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड,
सो सिमिलरली एक सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी अराउंड 200 मिलियन यूनिट्स। अगर वहां 4 यूनिट्स है तो यहाँ 200 मिलियन यूनिट्स होगी एक सिंगल रिएक्शन होने पे, ठीक है। सो न्यूक्लियर इज अ वेरी एनर्जी डेंस सोर्स, सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स इट इज क्लीन एंड ग्रीन, वो तो कोई दो राय है ही नहीं। So fuel requirement is also very less in case of nuclear. Global warming नहीं होता है, and we already know, आप लोगों ने भी बोला कि thermal coal is a fast depleting resource. So for long term energy security of the country, we have to give stress on nuclear energy. ठीक है? This is just a comparison in terms of land required या fuel required या emissions which are taking place in case of different forms of energy. ठीक है। Now, basic principle of electricity production. Electricity production का basic principle क्या है कि किसी भी फॉर्म में हमें हीट अगर एक बार मिल गई, चाहे वो थर्मल रिएक्टर में, मतलब थर्मल पावर प्लांट में केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मिले, या वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिजन रिएक्शन से मिले, किसी भी रिएक्शन से फाइनली हमें क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। That heat energy is used to convert water to steam. That steam is sent to the turbine. It rotates the turbine. Coupled with the turbine is the generator. Generator is copper coils moving in an electromagnetic field. So what you get is an electrical output. Okay? So this is the basic principle of electricity production via any source. In case of nuclear, what you have a nuclear reactor जिसमें यूरेनियम फ्यूल है, फिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, और फिर जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है दैट इज टेकन अवे बाय द प्राइमरी कूलेंट, एंड दैट हीट इज एक्सचेंज्ड इन द स्टीम जनरेटर विद द सेकेंडरी कूलेंट. That water gets converted to steam which is sent to the turbine, and then from generator you get the electrical output. So what are the main attributes of nuclear power? The fuel will be available for multiple centuries. We have vast reserves of thorium and moderate reserves of uranium. So overall, when we are talking about the 3-stage nuclear power program as was envisioned by Dr. Homi Jahangir Bhabha, the fuel availability is for multiple centuries in case of nuclear power. Safety record is superior among the major energy resources. It does not emit greenhouse gases. It is virtually pollution free. Its use will help in preserving precious fossil fuels for future generations. Costs are competitive and declining, and waste can be securely managed over the long term. So, if we talk of the safety aspects, देखिए जो यूरेनियम फ्यूल है ना वो यहाँ पे है. So जो यूरेनियम फ्यूल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ डाइऑक्साइड. तो UO2 जो मैट्रिक्स है, that matrix itself acts as the first barrier towards release of any radioactive products. Then it is there inside the fuel cladding. So cladding acts as the second barrier. Then you have the primary heat transport system or the coolant, which acts as the third barrier. Then you have the primary containment, secondary containment, and exclusion zone. So all these are barriers which prevent the release of radioactivity to the environment. And not only this, the nuclear power plants are designed such that any man-made or natural incidents which are occurring, like flood, then earthquake, or hurricane water spouts, or an airplane crash. So they are designed so as to withstand any natural or man-made events and remain in a safe state. This is okay. So this is the 3-stage nuclear power program which I was talking about. In the first stage, we are utilizing uranium, producing electricity, and when the fuel is used, we get plutonium in the used fuel, which we are reprocessing, extracting, and using as a fuel in the second stage. The second stage is the fast breeder stage, where we are producing more plutonium and also keeping thorium as a blanket in the reactor,
which gets converted to uranium-233. Now, this uranium-233 is what is used in the third stage of reactors, and as we have vast resources of thorium, so this will help in providing electricity needs of the country for multiple centuries. These are the various places where the nuclear power plants are located. At present, we have 22 operational reactors with a total capacity of 6,780 megawatt. Another 8,200 megawatt is under construction, and many more plants are planned in the future. So this is okay. Basically about radiation. This is telling you that we get radiation as a part of our daily life. So if you talk of the light, it is of the order of 3,000 millisievert. In comparison to that, the radiation which you're getting from a nuclear power plant is just of the order of that trick. Okay, and this is the kind of quantity of waste which is generated when we generate electricity from a nuclear power plant. So this is telling you about our capabilities. So Nuclear Power Corporation of India Limited is doing all sorts of activities, right from siting, designing, construction, commissioning, operation, upgradation, and waste management. So we are a profit-making AAA rated company which is serving the nation by means of producing electricity from the power of the atom. This is a slide showing the corporate social responsibility. So as a responsible profit-making public sector organization, we are giving services in corporate social responsibility in many fields such as skill development, sustainable development, sanitation, infrastructure, health, and education. Then if you ever have a chance to visit one of the nuclear power plants, you will see that it is all around surround. These are the actual photographs of the nuclear power plants which are there in India. So it is surrounded by beautiful greenery and flora and fauna, butterfly gardens, various variety of birds which you would normally not even see in the cities which are there, like Delhi, metropolitan cities, Bangalore. Many of the species sparrows, which you will not see there, you will see in the vicinity of the nuclear power plants. So this was basically my presentation, and just one video also I would like to show you. This is showing the working of a nuclear power plant. You will definitely enjoy that video. 1 second. Ma'am, I have one doubt. Just after the video, we will take the doubts, if you don't mind. Okay. No problem. Just. Hello, viewers. Nuclear Power Corporation of India Limited welcomes you to this virtual tour of a nuclear power plant. Nuclear Power Corporation of India Limited, a public sector enterprise under the administrative control of the Department of Atomic Energy. Are you able to see and hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Three-dimension animation is the simplified replica of a 540 megawatt pressurized heavy water reactor, or PHWR. In this virtual tour, we will take you through various processes of a PHWR. A nuclear power plant houses several buildings and structures, but there are two main buildings in which nuclear power generation takes place. The two dome-shaped structures seen here are the reactor buildings, and the rectangular structures on the side are the turbine buildings. Let us first learn about the reactor building and its systems. The reactor building is a tall and rigid structure with a height of 50 meters and a diameter of 56 meters. The specialty of the reactor is that it is kept at negative pressure than the atmosphere outside to contain radioactivity within the building. This round-shaped building is made of two enveloping walls, known as the inner and outer containment walls. These walls
walls are separated by a gap of 2 meters. Like inside the reactor building, the gap between the 2 walls is also kept at negative pressure to prevent radioactivity release to the atmosphere. The inner containment wall is made of pre-stressed concrete, while the outer containment is an RCC structure. Both the walls are capped with a reinforced concrete dome. Inside an actual reactor building, there are several intricate systems, equipment, pipes, and cables. But this simplified view shows only the most important parts, like the suppression pool, Calabria, coolant, moderator, steam generators, reactor shutdown systems, and control rods. Let us begin with the suppression pool, which is located at the bottom. It is basically a large reservoir of water used for long-time cooling of the reactor core and used as a supplement to other cooling systems. Above the suppression pool at the center of the building, there is a massive structure called the Calabria, which is also the heart of a nuclear power plant. In fact, the nuclear fission, a crucial process in a nuclear power plant, happens inside this horizontal cylindrical vessel. The Calabria is made up of a high-grade stainless steel with a diameter of 5.9 meters and a length of 7.8 meters. The stainless steel structures that are connected at either side of the Calabria are called end shields. The Calabria is filled with heavy water, which acts as a moderator to slow down the neutrons produced in the nuclear fission chain reaction. A set of pipes called coolant channels pass through the Calabria and end shield assembly. The metal used for these pipes is an alloy of zirconium and niobium. 392 such coolant pipes exist in a 540 megawatt heavy water reactor. Each coolant assembly, in fact, has 2 concentric pipes, one inside the other. The outer pipe is called the Calabria tube, while the inner pipe is called the coolant tube, or pressure tube. For thermal insulation, carbon dioxide is filled between these pipes. The coolant tube has mainly 2 things inside. 1, the heavy water flow that helps to transfer heat to the steam generator. 2, the fuel bundles that generate heat by fission process. Loading new fuel into or removing spent fuel from the reactor is carried out by 2 fueling machines at both ends of the Calabria, which are computer controlled. In Indian PHWRs, the fuel loading is done while the reactor is in operation. This online fueling helps maintain reactivity, power levels, and symmetry. As a result, the coolant also moves through the reactor in both directions. Let us now understand how the fission process takes place in this PHWR. The loaded fuel bundles consist of natural uranium, which is a common element found in the Earth. But how is it used as a fuel? Let's get to know some basics. Natural uranium has 2 types of atoms or isotopes, namely U-235 and U-238. Among these 2, the U-235 is the fissile material. When this fissile material is struck by a slow neutron or a thermal neutron, it will split up into 2 or more fragments. This splitting is accompanied by a tremendous release of energy in the form of heat and 2 or 3 fast neutrons. These fast neutrons are thermalized or made to slow down by the moderator in the Calabria, so that they have a high probability of hitting other U-235 atoms, thus causing and sustaining a controlled chain reaction that releases more energy and further sets of neutrons and fissions. Thus, in a nuclear reactor, a controlled, self-sustaining nuclear fission chain reaction is achieved. As a result, heat is produced. The flowing heavy water inside the coolant tube transfers this heat to the 4 vertical cylindrical steam generators that are placed at a higher elevation. Upon receiving the heat, the steam generators, which are filled with flowing light water, raise the steam. The steam raised in the steam generators is taken to the turbine in the adjacent building through the steam pipes. The turbine generator assembly or turbo generator in a 540 megawatt PHWR has 1 high pressure turbine and 2 low pressure turbines.
The steam raised in the steam generators upon reaching the turbo generator assembly rotates the turbines. The generator, coupled with the turbine, also rotates and generates electricity, which is evacuated through a switchyard and transformer. This nuclear electricity is sent to the electricity grid through high-tension transmission lines, which in turn is distributed to the end users. Back in the Calabrian, in the reactor building, there are two more important systems: control systems and the reactor shutdown system. The control rods are used to maintain the desired power level of the reactor, while the shutdown system helps to bring the reactor in safe shutdown during normal and emergency operations. There are many other safety systems engineered in the nuclear plant to ensure a very safe operation of the reactor. The entire operation of a nuclear power plant is controlled through qualified, trained, and licensed operators. The possibility of human error is minimized by the installation of automated and computerized systems. Viewers, so with this video, I would like to end my session. So I tried to give you a brief about the nuclear power plant and its working, and how nuclear power is important in the present scenario. And I think somebody was wanting to ask something. Yes. बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछे. Please ask your question if you have some queries. Ma'am, one question has been put in Facebook account also, that if any student wants to be engineer for this NPCIL or Department of Atomic Energy, what should be his prime focus, and how she should go through his career? Yeah, so actually for getting into Department of Atomic Energy or NPCIL in specific, if I talk, and same is true for Bhabha Atomic Research Center also, first of all, they have to have a good GATE score. So when they have a good, because the initial criteria for calling for interview is the GATE score. So a minimum cutoff is required, which is normally very high, 96 plus only. So a good GATE score would help them clear the prerequisite for appearing for the interviews or the written exam. So BARC has written exam as well as interview, whereas we have only interviews. So that advertisement for recruitment is posted in all the major newspapers, even on social media, employment news, various places it is posted. And once you have a good GATE score, then you can apply for the, you can apply with your GATE score, and then if you qualify, you will be called for the interview in case of NPCIL, and written exam and interview in case of BARC. And once you clear all that, you will be recruited into the department. Any other question from audience, students and teachers? Yes, ma'am, I have a doubt. Yeah. Actually, you asked before also. I'm sorry. Yes. Actually, आपने बताया कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इनके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है एंड बर्ड्स वगैरह बहुत सारी डिफरेंट होती है. मैम, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे तो रेडिएशन होनी चाहिए एंड बर्ड्स वगैरह रेडिएशन में मर जाती है. Correct. Huh? Where do you live? I am from New Delhi. New Delhi. Okay, so you are very near to Narora Atomic Power Station. I would request you, and in fact, we would welcome you to please come and visit Narora Atomic Power Station. You tell me whenever it is convenient, we will arrange a visit for you. Then you can see in person the actual greenery which is there around the nuclear power plant, first of all. Secondly, I told you, see, radioactivity is there. Like, for example, LPG is an explosive. It is there inside the cylinder. The cylinder is there inside our kitchen. So we are keeping an explosive inside our kitchen.
but still is there any harm? No. We are working, we are making food, correct? Why? Because we have controlled the pressure, we have controlled the parameters, and we have the mastery over the technology. So same is true with nuclear power. We have various barriers which help prevent the release of radioactivity. It will not even come out of the fuel pellet. Leave alone anything else, it will not even come out of the fuel pellet, because the pellet is designed, the cladding is designed such that when the reactor is operating, it can bear those pressures. So it will not, like the gas does not come out of the cylinder, the petrol does not come out of the fuel tank, even when it is burning inside the automobile. Okay, so similarly the technology is mastered. प्रॉब्लम कहाँ है, हमें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्योंकि हमने बचपन से वो चीजें अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में पढ़ी नहीं है, हमें उतना अवेयरनेस नहीं है. सेकेंडली, एज ऑफ नाउ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया इज हार्डली 3%. सो क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही इतने कम हैं कि हमें बहुत ज्यादा उनके बारे में पता नहीं होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तक मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया था, मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अपने स्कूल कॉलेज में कभी भी पता नहीं चला. And that is why I am so pro towards all these campaigns of making more and more people aware of the actual working of a plant. And I am seriously and definitely inviting you to please come and visit a nuclear power plant. तो तब ना आपको actually, in fact, नरोरा में ना नमामि गंगे project, नरोरा is built on the banks of river Ganga. नमामि गंगे project के तहत ना वहाँ पे turtle within our plant premises, turtle conservation, butterfly gardens, इतना beautiful flora and fauna है that you will be really amazed. Huh? So definitely you plan someday, you get in touch with me. I will ensure that you and your friends or anybody. Yeah. What is your background? You're from teaching background? No, ma'am, I'm a student right now. Okay. So maybe students of your college, we can very well arrange a visit. 40-50 students, we can arrange a visit. Sure, ma'am. I'll definitely talk with them and connect with you. Definitely. Huh? So you will not have that doubt any further in your life. And you will be able to tell others also. Yes, ma'am. Any other? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है वो कहाँ पर एक्सक्रीट किया जाता है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इंडिया में ना क्लोज फ्यूल साइकिल है. एक फेज ऑफ रिएक्टर से जो यूज्ड फ्यूल निकलता है ना, वो रीप्रोसेस होके नेक्स्ट फेज ऑफ रिएक्टर्स में जाता है. सो फ्यूल हमारे यहाँ वेस्ट है ही नहीं. इनफैक्ट इट इज अ वेल्थ एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टर्स. उसके बाद भी जैसे रीप्रोसेस करके हमारा फ्यूल हमने जो 98-99% है वो हमने निकाल लिया, उसके बाद जो 1-2% बचता है ना, दैट इज वेरी वेरी मिनिमल and that can be very well stored and monitored and safeguarded. So there is absolutely no problem of waste disposal or waste management. बहुत ही technologically advanced है India in case of waste management and waste, waste immobilization, waste storage, waste management. In fact, to tell you, India is the only country in the world. क्या होता है जब फिजन रिएक्शन होता है, फिजन प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं. वन ऑफ द फिजन प्रोडक्ट, तो क्या जो हमारा फ्यूल है वो तो रिप्रोसेस होकर नेक्स्ट स्टेज में चला गया, लेकिन जो 1-2% फिजन प्रोडक्ट्स बच गए ना, उनको हम क्या करें? तो उसके लिए भी ना बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया. इनफैक्ट एक सीजियम 137 करके फिजन प्रोडक्ट निकलता है, and India is the only country in the world which is developing cesium pencils, cesium vitrified in glass matrix, and that it is supplying to all hospitals of the country, which is acting as a blood irradiator that is used for irradiation of blood. तो ऐसे बहुत सारे products हैं जिसको हम medical application, industrial application और societal benefits के लिए use करते हैं. Okay? Ma'am, I have a question. Tell me. We are crossing the time, but last question. Tell me, Naresh. Myself, Ahna, ma'am. Yeah, actually, I wanted to ask that what will be the major disadvantage for using nuclear energy? Okay. So it is a good question,
there is absolutely no disadvantage for using a nuclear energy. It is environment friendly, it is clean and green. Based on the technological developments we have had so far, it is becoming cost effective also. The only small disadvantage you can say is that it is a capital intensive kind of industry. Like the initial capital investment is very high. But if you see the lifetime of the reactor or a lifetime of a thermal power plant, so like the fuel required in case of a thermal power plant may be of the order of 14 truckloads daily. And that required for a nuclear power plant is 16 truckloads in a year, as I showed in one of the slides. So if you see the overall lifetime now, it will become more or less the same as that of its contemporary power generating technologies. So basically speaking, there is no disadvantage I can think of producing electricity with nuclear energy. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Ma'am, one question more. One question is that what is the differences between whatever the explosion done in Pokhran, which is related to our Abdul Kalam sir also, and this is the one another question came. तो मैं आपको इसके लिए जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल एज अ लेमैन मैं बताना चाहूंगी, ये जो फायर है, फायर कैन कॉज फॉरेस्ट फायर आल्सो, लेकिन फायर जो है सिर्फ एक दिया भी जला सकती है. तो अगर हम सिर्फ एक तीली से दिया जलाते, फायर इज सेम, चाहे वो फॉरेस्ट फायर में है या वो दिया जला रही है. सो डिपेंड क्या कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका, जो फ्यूल है, जो मतलब हमारे पास फ्यूल अवेलेबल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है. तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ना वी आर यूजिंग यूरेनियम व्हिच इज नेचुरल यूरेनियम which is taken out from the earth. तो उसमें यूरेनियम का concentration जो फिसाइल कंटेंट है that is 0.7%. And even some reactors use enriched uranium, but that enrichment is of the order of 4%, 5%, इतना. That which is used for strategic purposes और defense purposes, वहाँ पे यूरेनियम का enrichment जो होता है, जो फिसाइल कंटेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ही 98, 99, 99.9 उस ऑर्डर का होता है. सो अगर इतना हायर ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन है फिसाइल मटेरियल का ना, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सप्लोजन. अब आप एक माचिस की तीली और एक दिए और बाती से एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो इट इज समथिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. सो वैसा है. Any more question from students or teachers? मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी नेचुरल या मैनमेड कैलामिटीज है ना, उसके लिए हमारे पावर प्लांट्स डिजाइन है. अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक तो हमारे घर पे भी आ जाए. तो जब हमारा घर का बिल्डिंग डिजाइन होता है नॉर्मल अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग इतना एडवांस्ड है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो डेफिनेटली मच हायर अर्थक्वेक. इट्स नॉट ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई भी सिविल स्ट्रक्चर, कोई भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड फॉर बीइंग safely brought to a safe state in an earthquake, and especially nuclear power plant. देखो क्या होता है, एक ऑपरेशनल बेसिस earthquake होता है जो कि थोड़ा लो लेवल का होता है, और एक सेफ शटडाउन earthquake होता है. अगर हायर इंटेंसिटी का भी earthquake आ गया ना, तो भी the power plant is designed to shut down safely. And during siting only we take care that we choose sites which are low earthquake prone areas. वो हम साइटिंग में ही we take care, and in spite of taking care we design also for SSC qualification and OBE qualification. Okay? Yes, ma'am. So, Ma'am, is this uranium is renewable or no? 1 second, huh? We will take the last question because we are already crossing time. So, Subhajit, tell me. Ma'am, this uranium is a renewable resource or an irrenewable? Okay. तुम किसी भी Because resource like को coal, I think so. So see, ये जो कोल है ये अर्थ के क्रस्ट में कैसे आया? बहुत सारे पेड़ कभी हजारों साल पहले ऐसा अर्थ के क्रस्ट में घुस गए होंगे, धीरे धीरे वो कोल बन गए, और
अभी से हजारों साल बाद फिर से वो कोल बनेंगे। तो रिन्यूएबल तो सारे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ही कोई भी मिनरल बोल दो, गोल्ड है, सिल्वर है, जैसा गोल्ड है, सिल्वर है, वैसा ही यूरेनियम है। तो ये क्या होता है, ये सब अर्थ की क्रस्ट में बनते हैं। देन जो अंदर जो भी जियोथर्मल एनर्जी की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे ही फ्यूल, फॉसिल फ्यूल भी बनता है। तो इनको हम सबको नॉन रिन्यूएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि द टाइम टेकन फॉर मेकिंग देम अगेन इज मिलियंस ऑफ इयर्स, और हमारा लाइफ स्पैन कितना है? मैक्सिमम 100 इयर्स। तो हमारे रिस्पेक्ट में वो नॉन रिन्यूएबल है। सो उस रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर बोलो या कोल बोलो, दोनों ही नॉन रिन्यूएबल है। और जैसे आप सोलर को हम क्यों रिन्यूएबल बोलते हैं? डेली सूरज आता है, तो डेली वी कैन टैप फ्रेश एनर्जी फ्रॉम देयर, सो वी कॉल इट रिन्यूएबल रिसोर्स। Yes, ma'am. So I think we can end it because I have another session at 2 o'clock. So Can you give me your email address, email ID? You can take it from Banik ji. He has all the details. So he is the main coordinator. He will give you all the details. Thank you, ma'am. Thank you for being with us. It's a great session. And great motivation also. I have to say it's a great motivation for the students and teachers also. Because basically we have no understanding about the atomic energy and especially power plants. It's a for us it's a unknown thing, and also a very protective thing, conservative area. So In fact, on this platform, I would like to invite all of you to visit the nuclear power plants which are there in your vicinity. All of you. Sure, ma'am. So Sure, we ma'am. can arrange visits for all of you to the nearest nuclear power plants in your area. Sure, ma'am. We will do everything for under your consultation, and we hope our students, our teachers, and our audience will be benefited with this one. And it will give a newer state of energy to our self also, our HRD also, in making of Atmanirbhar Bharat and the new India also, which is the main motto of our government also. So in this process, it's a very fruitful session. Thanks to all the students and teachers who joined this session. We will do organize in such sessions in different with different organization, even DAE and NPCIL also in different moment. So please keep in touch with us. So thank you, ma'am. Thank you, ma'am, once again. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you. एक बार आप सब एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तो एक फोटो सेशन करने से मुझे लगता है अच्छा रहेगा. प्लीज ऑन योर कैमरा. Lot of thanks. Excuse me, sir. Hello. Thank you for being with Can you us. send Sir, me? is there any attendance link? Yes. No, Sir, is there any attendance link? we'll give it to you. Okay, sir. Sir, can you give me email ID of ma'am? We'll discuss later, huh? Okay, sir. It was a great session from from
Nuclear Power Corporation of India Limited. In collaboration, they have conducted this session and organized by WIPNet, Vigyan Prasar, Network of Science Clubs, affiliation, National Council of Research and Teacher Scientist India, National Council of Student Scientist India, and Government of Tripura affiliated Voluntary Science Organization TASA India. Thank you for being with us. Keep in touch with us. Thank you. Jai Vigyan. By this time, we are just highlighting some comments came in Facebook. Thanks for being with us in Facebook also. So many people are there in Facebook. Thank you. To this event, I would like to convey one message also. We are once again starting India International Sarabhai Student Scientist Award Program for 2023 from 1st January 2023 to a registration come e-quiz on syllabus, which is given in the description link also of YouTube, and it is also shared in Facebook also. So please be with us and also visit about the event through sites.google.com /view/Sarabhai SSC. Thank you. Jai Vigyan.